Section 19. In this video, we'll discuss subsidiary company not to hold shares in its holding company. आइए definition अपने देखते हैं. As per Section 19 provides that a subsidiary company cannot hold shares in its holding company either directly or through nominee. Similarly, a holding company cannot allot or transfer its shares to its subsidiary company. Any such allotment or transfer is void. These provisions prevent circular ownership and ensures effective control by the holding company. ओके इसमें इस डेफिनेशन में बोलता है कि सेक्शन 19 के हिसाब से जो सब्सिडियरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी की शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती है डायरेक्टली और थ्रू नॉमिनी और अलॉट भी नहीं कर सकती. अगर जो ऐसा कुछ होता है तो ये टोटली वॉइड है. ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोविजंस को देखते हैं अपने. सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 prohibits on prohibition on holding companies shares. No subsidiary company shall hold shares in its holding company directly or hold through the nominee. Further, a holding company cannot allot shares to its subsidiaries, or a holding company cannot transfer shares to its subsidiary. Any such allotment or transfer is void. ये आप एमसीक्यूज के लिए देख लीजिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अपने देखते हैं कि एबीसी लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड. XYZ Limited cannot purchase shares of ABC Limited. ABC Limited cannot transfer its shares to XYZ Limited. Such transfers are void under Section 19. Okay. Exceptions to these sections is the provision that does not apply the following cases. Exceptions 1. Legal representative. A subsidiary company may hold shares in the holding company as a legal representative of or deceased members. फिर उसके बाद से आता है एक्सेप्शंस टू जो ट्रस्टी के लिए. अ सब्सिडियरी कंपनी में होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी. एक्सेप्शंस 3 जो है वो है कि आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिफोर becoming subsidiary, where a subsidiary company already hold shares in the holding company before becoming its subsidiary, it may continue to hold such shares. मतलब इसका मतलब ये है कि सब्सिडियरी बनने से पहले ही उस कंपनी का अगर जो वो शेयर होल्ड किया है और बाद में सब्सिडियरी बना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड है. ठीक है, फिर उसका साथ हमने वोटिंग राइट्स पे. Voting rights restrictions. In the above third exception, the subsidiary company cannot exercise voting rights merely because it held these shares before becoming a subsidiary. Voting rights are allowed only where shares are held a as legal representative or as a trustee. ठीक है, मतलब आपको जो है सब्सिडियरी बनने से पहले जब आपने शेयर होल्ड किया था उस समय आपको वोटिंग राइट्स का हक था, अभी वोटिंग राइट्स आपका नहीं है. ठीक है ना. फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल. If the holding company is a company limited by guarantee, an unlimited company having no share capital, then the word shares shall be interpreted as a interest of members in that company. ठीक है. सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 penalties for contraventions. If the provisions of section 19 is contravened, the company and every officer in default shall be liable to a penalty. Penalty as provided in the section 450 of the Act. Penalty under section 450, fine may extend to 5 lakh, and for continuing default, additional fine which may extend to रुपीज 1000 पर डे. फिर उसके बाद से अपने आते हैं इसके फीचर्स पे. तो पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद से फीचर्स देखते हैं. सेक्शन 19 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंट सर्कुलर शेयर होल्डिंग, अवॉइड conflict of interest, ensure that the holding company genuinely controls the subsidiary, protect the shareholders and creditors, maintain transparency in our corporate structures. अब आते हैं फीचर्स ऑफ द सेक्शन 19. फीचर्स जो है ये भी एज इट इज सेम ही है जैसे
prohibits the circular ownership, prevents a subsidiary from indirectly controlling its parent company, maintains holding subsidiary relationship, ensures the holding company remains the controlling entity, prevents manipulations of voting rights, avoid artificial enhancement of voting rights within a corporate group. फिर उसके बाद से आता है आपका प्रोवाइड्स लिमिटेड एक्सेप्शंस, रिकॉग्नाइज practical situations such as trusteeships and legal representative, protects corporate governance, promotes transparency and accountability in the ownership structures. Advantage of the Section 19 is prevent conflict of interest. A subsidiary company cannot influence decisions of its holding company through share ownership. First class ensure effective control. The holding company retains actual controls over the subsidiary. Protect minority shareholders. Avoid manipulations of voting rights and management decisions. Promotes ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो प्रमोट करता है वो कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर्स रिमेन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल है। फिर उसके बाद से रिड्यूस रिस्क एज ऑफ फ्रॉडुलेंट स्ट्रक्चर्स, प्रिवेंट क्रिएशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रॉस होल्डिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद से इसका जो कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है वो है, जैसे सपोज कीजिए कि एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड इज द सब्सिडियरी कंपनी। ओके, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कैन नॉट बाई शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, सही बात है। एबीसी लिमिटेड कैन नॉट अलॉट और ट्रांसफर शेयर्स टू एक्स वाई जेड लिमिटेड, एकदम सही है। फिर उसके बाद एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज डिजीज्ड बाई members trustee existing shareholders before it becomes subsidiary, एकदम सही है। कन्वर्जन ऑफ कंपनीज और चेंजेस इन क्लास इज परमिटेड अंडर सेक्शंस 18 बट होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी रिलेशंस रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस सेक्शन इज रिस्ट्रिक्ट द इन्वेस्ट restricts the investment flexibility, limited treasury management options. Corporate groups have a favor of options for internal investment agreement. फिर उसके बाद से आता है compliance monitoring required. Companies must continuously ensure compliance with the provisions. Complexity in the group of restructuring. Certain restructuring transactions may require additional planning to avoid violations। फिर उसके बाद से आता है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट। कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट जो है लीगल एडवाइस, डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसीड्यूरल requirements may increase cost, and the key takeaways of this section is the section 19 ensures that a subsidiary does not own or control its holding company, thereby promoting fairness, transparency, and sound corporate governance.